The essence of mathematics is not to make simple things complicated but to make complicated things simple. Hello everyone. Today we shall confine ourselves by the laws of algebra of matrices. Dear student, matrices means the power of organized numbers. The study of matrices is widely used in every field of mathematics, science, and engineering. The basics learning outcomes of these chapters. The students will be able at the end of this chapter to understand the matrix concepts and its types, square, identity, and zero matrices. Second is perform operations, additions, multiplications, and transpose. Third is apply the matrices to solve the linear system or linear equations. Fourth one is find the determinants and inverse if they exist. And the last but not least, we can use the matrices in real words problem. Now let us start our chapters with the introduction by the definition of matrix. A matrix is a square or rectangular array of numbers written within square bracket in a definite order in rows and columns. For example, you can see on the screen as Akshit has 15 books and 6 notebooks. Ayush has 10 books and 2 notebooks. Arav has 13 books and 5 notebooks. We can arrange in a tabular form as you see in the screen. In right hand side, you can see the table within yellow color. How can we arrange this information in tabular form? But there is another way to represent this information. This is called the matrix. At the last, you can see that there is a rectangular array. यहाँ पर एक rectangular array है and the data is in the form of row and column. The vertical line represent as a first column, second vertical line represent as a second column. If we see that this information in the form of horizontal, 615 represent first row, 210 represent second row, 5 and 13 represent third row. So dear student, we can arrange the same information in another form that is called the matrix. The next is representation of the matrix. Dear student, we can represent the matrix as a capital letter and its elements represent as a small letter. By the small letter, you can see on the screen matrices A, which is equal to in a square bracket aij represent the एलिमेंट aij को हम एलिमेंट कहेंगे वेयर आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है nth रो को, j nth कॉलम, aij एलिमेंट्स, m represent the number of rows and n represent the number of column. And the next concept is order of a matrix. Dear student, we can find the order of a matrix with the help of number of rows and number of column. If there is a number of rows is 2 and number of column is 2, the order will be 2 into 2. फर्स्ट नंबर पर m into n, हमने जैसे लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि m into n बाहर ब्रैकेट में मेंशन था, वो m into n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है. m नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करेगा, n नंबर ऑफ रो को. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर इज ए मैट्रिक्स A and the matrix B. The order of matrix A 2 into 2 because there is a 2 horizontal line and 2 the vertical line. But in matrix B there is a 3 vertical line. 3 vertical line means 3 columns and 2 horizontal line means 2 rows. The order will be 2 into 3. And by multiplying these numbers, अगर हम इन numbers को इस number of row and number of column को multiply करें, then we will get the number of elements. Then you can see in matrix A has 4 element because the order is 2 into 2. In matrix B, total elements is there are 6 because the order is 2 into 3.
Next is types of matrices. Now first type is rectangular matrix. A rectangular matrix are those matrices in which number of rows and number of columns are not same. For example, matrix A has, there is one column but there are 3 rows. The order will be 3 into 1. In matrices B and in matrices C, you can check there. The order will be 2 into 3 and 3 into 2. Second type is column matrix. Column matrices are those matrices in which we have only one column but infinite number of row there, another row there. You can see matrix A, matrix B and matrix C. All are, it have the number of column is 1 but number of there will be 3. The order will be 3 into 1, but in journal, the order of column matrix is always n into 1. Next, third type is row matrix. The row matrix are those matrices which has only one row but infinite number of column. Fourth is square matrix. If the number of row and number of column are in equal number, it means same row and same column. 2 rows, 2 column. 3 rows, 3 column. 1 row, 1 column. So this is called the square matrix in which number of rows and number of columns are equal. Type 5, diagonal matrix. Dear student, first property of diagonal matrix is it should be square. A square matrix with all elements are 0 except elements in the leading diagonal, and diagonal is always left to right, not right to left. Left to right हमने काउंट करना है डायगोनल को. इनमें डायगोनल एलिमेंट गिवन होंगे एंड अदर एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0. तो दिस इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिसेस. Next, type 6, scalar matrix. A diagonal matrix whose all leading diagonal elements are equal is called the scalar matrix. अब scalar matrix की क्या प्रॉपर्टी है? एक तो वो diagonal matrix है. Second thing, diagonal element क्या होने चाहिए हमारे? Same. Then we can say that it is a scalar matrix. And the type 7 is unit matrix, जिसको हम identity matrix भी बोलते हैं. क्लियर है? इसको हम कैपिटल आई से हम डिफाइन करते हैं या हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. एंड द यूनिट मैट्रिक्स इन विच अ डायगोनल मैट्रिक्स. अब यूनिट मैट्रिक्स की भी क्या प्रॉपर्टी है? वो डायगोनल मैट्रिक्स है. अब डायगोनल मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी है? वो स्क्वायर है एंड डायगोनल एलिमेंट्स हमें गिवन होंगे बट अदर्स आर इक्वल टू 0. एंड इन यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1. Fixed है r equal to 1 and other elements are equal to 0 and it represent by capital I. Next is zero matrix, which we called null matrix also. A matrix all are whose elements are equal to 0. जिन matrix के all elements 0 होते हैं, this is called the null matrix. Now above all these types there is a question, construct a 2 into 2 matrix. अब 2 into 2 means 2 rows 2 column. अब हमें एक मैसिव मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिनमें 2 rows होंगी 2 column. अब 2 rows 2 column means there will be total 4 elements and the matrix whose elements are given by a I j. अब a I को किस लिए डिफाइन किया था हमने? nth रो के लिए. j किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? nth कॉलम के लिए. अब ए आई जी की वैल्यू उन्होंने हमें दे दी है कि आई प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड देयर 4 एलिमेंट्स. नाउ 4 एलिमेंट्स इट मीन्स A11, A12, A21, A22. A11 मीन्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो. A12 मीन्स सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो. A21 मीन्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो and A22 is second element of second row. It means in the given condition a I j में हमें I को और j को रिप्लेस करना है by 1 1, by 1 2, by 2 1 and by 2 2. Then we will get the elements of this matrix. अब A11 as we replace I equal to 1 and j equal to 1, then we will get the value of A11 equal to 2 and A12 is 9 by 2, A21 is 9 by 2 and A22 is 8.
And last type is equal matrix. It is very important matrix, and there will be 1 marks question can be there in MCQs form based on this matrix. And now equal matrix are those matrix in which टू मैट्रिक्स को हम इक्वल कब कह सकते हैं, हम कंपेयर कब कर सकते हैं, इफ दे हैव सेम ऑर्डर. अगर उनका ऑर्डर सेम होगा देन वी कैन से दैट एंड कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम. फर्स्ट वन इज ऑर्डर विल बी सेम, सेकेंड वन इज कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट. अब कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मीनिंग क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी. अगर हम दोनों कंपेयर करेंगे ये इक्वल हैं तो इनके ये एलिमेंट्स हमारे पास क्या होने चाहिए? सेम. देन वी कैन से दैट दे आर इक्वल मैट्रिक्स. नाउ यू कैन सी अ वन एग्जांपल ऑन द स्क्रीन कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी हमें गिवन है और दे आर इक्वल, हमें कंडीशन भी गिवन है इक्वल. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी. अगर इक्वल है तो वी विल कंपेयर द कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट. हम कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे? As we can see 2a first element equal to first element, 2a equal to 48, then the value of a will be 24. Second element of first row is 3b minus 1 and the second element of matrix B is 5. So they will be equal because we have given that if two matrices A and B are equal, then we will get the value of B equal to 2. Similarly, we can find the value of C and value of D which is equal to 32 and 9 respectively. I hope you understand, dear student, you understand the all types and the question based on these types. Now there is a assignment. You can solve this question. There will be 3 questions based on these types. First one is construct a matrix of order 2 into 3. अब लास्ट टू लास्ट स्लाइड में हमने देखा था, हमने क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट किया था, मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट किया था. वहाँ पर 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी. यहाँ आपको कितने ही कंस्ट्रक्ट करनी है? 2 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स. और कंडीशन हमें क्या गिवन है? ए आई जे विच इज इक्वल टू आई इंटू जे. इट मीन्स आपको आई को जे से मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइडेड बाई 2. एंड 2 into 3 मीन्स देयर विल बी 6 एलिमेंट्स. अब आप देखोगे कि आपको कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है. Second question we have given that two matrices are equal and you have to find the value of x and y. And third question we have given that there are total 48 elements. हमारे पास 48 एलिमेंट्स हैं. इन 48 एलिमेंट्स को लेकर आप कितने मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हो डिफरेंट ऑर्डर. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव 12 एलिमेंट्स, देन वी कैन कंस्ट्रक्ट 2 into 6, 6 into 2, 2 मैट्रिसेस होगी. 3 into 4, 4 into 3 एंड एनी मोर. आप ऐसे भी कहीं और कंस्ट्रक्ट कर सकते हो डिफरेंट ऑर्डर. बट मे बी रिमेंबर वन थिंग, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए. आप 0 नहीं ले सकते, आप 1 से स्टार्ट कर सकते हैं. आई होप you will be the understandable today's concept. Thank you.